Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss inhibitors. So let's move to the whiteboard. So inhibitors. So that is the last topic of this chapter and very important regarding short questions, MCQs. So dear students, inhibitors. So this word comes from inhibit. तो inhibit का मतलब होता है रोक देना, to stop, to check. Check का मतलब ही रोकना, stop का मतलब भी रोकना, inhibit का मतलब भी रोकना. So inhibit ers means the substances, the chemicals. So dear students, I'm going to define it. An inhibitor is a chemical that binds with enzyme but in place of substrate. So no products are formed. Clear? So an inhibitor is a chemical. Inhibitor एक ऐसा chemical होता है dear students जो enzyme के साथ जाकर bind तो करता है लेकिन किसकी जगह पे bind करेगा? उसके original substrate की जगह पे. आपने पढ़ा कि enzymes जो होते हैं they are specific in nature. Amylase हमेशा starch को ऊपर act करेगा. Lipase हमेशा lipids के ऊपर act करेगा. Clear? Pepsin हमेशा proteins के ऊपर act करेगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इनहिबिटर्स क्या कर रहे हैं? ये ऐसे केमिकल्स हैं जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट की जगह जाकर बाइंड हो जाते हैं. तो जब ओरिजिनल सबस्ट्रेट की जगह जाकर बाइंड हो गए तो एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएगा, मतलब दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. सो दैट वेरी काइंड ऑफ केमिकल्स आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स. फॉर एग्जांपल, cyanides means poisons, antibiotics, anti-metabolites, and some drugs. They are the examples of the inhibitors. Clear? Now dear students, there are two types of inhibitors. Number one are the irreversible inhibitors. So they check
check means to stop. Check means to stop. They check the rate of reaction by binding to the active site or by destroying the globular structure of enzyme. Clear? Irreversible inhibitors, dear students, ये सबस्ट्रेट की जगह उसी की यानी कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर बाइंड होंगे जाकर एंजाइम की एक्टिव साइट पे, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कंप्लीटली ये ब्लॉक कर देंगे, मतलब एक्टिव साइट के ऊपर जाकर बाइंड कर जाते हैं, या फिर इस तरह से इफेक्ट करते हैं कि उनका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो ही लॉस हो जाता है। तो आपको पता है कि एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस होने का मतलब है कि द एंजाइम हैज़ बीन डीनेचर्ड, और डीनेचर्ड एंजाइम कभी भी सही तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। Thus, no products are formed. Clear? These inhibitors bind with enzyme by covalent bonds. और dear student, आपको पता है कि covalent bond, that is a strong bond. Clear? And its examples are cyanides, the poisons, और इसी तरह से some drugs, for example, like the aspirin. Aspirin, it binds with cyclooxygenase, that is the enzyme, permanently by covalent bond and blocking the active site completely. Clear? So that is an example of irreversible inhibitors. तो क्लैरिफाई हुआ डिस्टेंस, ये परमानेंटली जाकर अटैच हो जाती हैं और वहां से उतरते ही नहीं, इनके नाम से जाहिर है, ठीक है। सो दे परमानेंटली ब्लॉक एंजाइम। क्लियर? तो किसी भी सूरत में चाहे जितना मर्जी सबस्ट्रेट डाल लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए तो इनका नाम रखा गया है इर्रिवर्सिबल। अटैच हो गए, अब ये डिटैच नहीं होंगे, ये एंजाइम को तबाह करके निकलेंगे वहां से, या उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर उसकी एक्टिव साइट के साथ जाकर कोवलेंटली अटैच हो जाएंगे। नाउ द सेकंड टाइप is the reversible inhibitors, तो नाम से जाहिर है रिवर्सिबल मतलब वक्ती तौर पर अटैच होते हैं, टेम्पोररली दे विल अटैच टू द एक्टिव साइट्स बट दे कैन बी रिवर्स्ड। So these inhibitors bind to the active sites by weak linkages,
by weak linkages like hydrogen bonding or hydrophobic interactions. ये वीक लिंकेजेस हैं, इन बॉन्ड्स को नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स भी कहा जाता है. क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और hydrophobic interactions and block the active site temporarily. Their effect can be neutralized by increasing the concentration, the substrate concentration. जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दिया जाए तो इन रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कंप्लीटली भी और पार्टली भी. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं ये फर्दर आगे दो तरह के होते हैं. सो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू two categories. So here we go. Number one are the competitive reversible inhibitors. तो डियर स्टूडेंट्स जरा नाम पे गौर करें. कंपिटिटिव मीन्स इट्स इज फ्रॉम कंपटीशन. तो कंपटीशन किसके दरमियान हो सकता है? तो कंपटीशन कोई भी दो दिखने में एक जैसी चीज़ों का मॉर्फोलॉजिकली जिनकी अपीयरेंस एक जैसी हो उनके दरमियान हो सकता है. फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लेट्स लाइक इफ आई से कंपटीशन बिटवीन कोरोला एंड कोरोला. ठीक है, आप एक कोरोला 95 मॉडल है और कोरोला 2005 मॉडल है और इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सेम मॉडल्स. या फिर इसी सीसी के इंजन में आने वाली कोई और गाड़ी को कंपेयर कर सकते हैं. कभी भी मैं कार को कंपटीशन में नहीं ला सकता बाइक के नॉर्मली. ठीक है, तो कंपटीशन के लिए ज़रूरी है कि अलाइक होना ज़रूरी है. या तो कार का कार के साथ कंपटीशन, बाइक का बाइक के साथ कंपटीशन. तो यहाँ पर ये कंपटीशन है डियर स्टूडेंट्स वो किसके दरमियान है? सबस्ट्रेट के दरमियान और इनहिबिटर के दरमियान. इनमें से कौन जो है वो बाइंड करेगा एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ. सो कॉम्पिटिटिव इसलिए हैं ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल resemblance with substrate. They may be selected by the binding sites. एक्टिव साइट की जो बाइंडिंग साइट होती है हम डिटेल से बात कर चुके हैं. दो साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट. तो इनकी शक्ल जो है, इनका जो स्ट्रक्चर है इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का वो किससे रिजेंबल करता है? ओरिजिनल सबस्ट्रेट से. तो इस वजह से दे मे बी सेलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंजाइम बट no products are formed.
क्योंकि ओरिजिनल सबस्ट्रेट तो है नहीं, सो नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जब तक ये अटैच रहेंगे तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज मैलोनिक एसिड। हमारे बुक में ये गिवन है, मैं आपको मैलोनिक एसिड, it is the competitive inhibitor of succinic acid. Clear? So how? So this is the formula of succinic acid. So that is the original substrate. Clear? It is selected by the enzyme that is succinic acid dehydrogenase. So this is the enzyme, succinic acid dehydrogenase. एज का मतलब एंजाइम, सक्सेनिक एसिड का मतलब ये सक्सेनिक एसिड, डिहाइड्रोजनेज मतलब, सो दैट इज द एंजाइम। ये एंजाइम है जो कि सक्सेनिक एसिड की करवाएगा डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, दिस इज सक्सेनिक एसिड, द ओरिजिनल सबस्ट्रेट, ये इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसमें से रिमूव करवाएगा 2 हाइड्रोजन एटम्स को यहां से एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फ्यूमेरिक एसिड। So this is fumaric acid. So that is a product जो कि किसकी वजह से बन रहा है? इस बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। सक्सेनिक एसिड के ऊपर एक्ट कर रहा है सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, इसने 2 हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव करवाए ये ऊपर वाले, और यहां पर इन दोनों के दरम्यान में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, बाकी एज इट इज रहेगा। क्लियर? सो नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द फ्यूमेरिक एसिड। इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सक्सेनिक एसिड का, दैट इज मैलोनिक एसिड। So this is succinic acid dehydrogenase. The enzyme और ये है dear students, this one is the malonic acid. अब इसकी शक्ल
इसका स्ट्रक्चर इससे रिजेंबल कर रहा है सक्सिनिक एसिड के साथ, सिर्फ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, बाकी एज इट इज ये बिल्कुल उसके साथ रिजेंबल कर रहा है। इसी वजह से ये एक्टिव साइट, ये सारी एक्टिव साइट है इस एंजाइम की, दिस इज द एक्टिव साइट। ये सेलेक्ट तो हो जाएगा बाइंडिंग साइट के, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पर नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जब तक ये उतरेगा नहीं और ओरिजिनल सबस्ट्रेट यानी सक्सिनिक एसिड नहीं आकर अटैच होगा, तब तक यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। क्लियर? और दूसरी जो टाइप है ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव reversible inhibitor. So that is the second type of reversible inhibitor. So they have no structural resemblance to the substrate, so they are not selected by active sites. They bind to the site other than active site in such a way that original substrate cannot bind. So no products are formed. तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब इनकी शेप ही यानी स्ट्रक्चर ही रिजेंबल नहीं, नॉन कॉम्पिटिटिव हैं, रिजेंबल नहीं कर रहा होता ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ, तो इस वजह से ये एक्टिव साइट के साथ जाकर बाइंड नहीं कर सकते। पहली चीज़, अगर ये वहाँ पर बाइंड नहीं करेंगे तो कहाँ पर बाइंड करेंगे? तो ये एक ऐसी जगह के ऊपर बाइंड करेंगे अदर देन द एक्टिव साइट, जहाँ पर जाकर ये दे ब्रिंग सम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट के ओरिजिनल सबस्ट्रेट होते हुए भी वो वहाँ पर अटैच नहीं हो पाएगा जब तक कि ये वहाँ से रिमूव ना हो जाए। क्लियर? सो दैट काइंड ऑफ inhibition is called as non-competitive inhibition. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।